हाँ, जैसे ये दिस वाज वन ऑफ द ट्रोल्स, बहुत ट्रोल। जैसे मैं बॉम्बे आया तो अभी अबू जानी वाला जो एड शूट किया था वो मैंने डालना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग कि कथक को बदनाम कर दिया है, ये कर दिया, बिकॉज इट वाज लिटिल सेक्सुअल एंड इंक्लूसिव। द एड शूट was inclusive of all genders, all sexual orientations, all kind of figures, fat, thin, normal, whatever. हॅलो एव्हरीवन, दिस इज श्रेयस. चान्स पे डान्सच्या आजच्या ह्या एपिसोडमध्ये परत एकदा तुमचं सगळ्यांचं खूप स्वागत. आय एम गोइंग टू टॉक टू अँड मीट समवन टुडे whom I have been following on multiple social media platform for quite some time. मी ज्या माणसाशी बोलणार आहे तो स्वतः दिल्लीचा आहे, त्यामुळे आज आपलं हे जे काही संभाषण आहे ते आपण हलकंसं हिंदी इंग्लिशमध्ये ठेवणार आहोत. पण खाली सबटायटल्स नक्की असतीलच, त्यामुळे ते बघायला विसरू नका. बट सेड दॅट, I am going to meet someone who's been a fabulous Kathak dancer. As I said, I personally love whatever work he does. And so let's see whom we are meeting today and what kind of a dance form we are going to talk about. So let's welcome Avenav Mukherjee. Thank you. Avenav, first of all, thank you so much for taking time in your busy schedule and just being here. How are things? How's it going? Well, pretty good, and thank you for inviting me here, and thank you for that lovely introduction also. Yeah. Thank you so much. And why don't you tell your fans and our audience that what kind of dance form are we going to talk about today? So I'm a Kathak dancer, so we are going to talk about Kathak and everything related to it, around it. Absolutely, and I wanted him to say that is because so that you can follow him, you can see his work, what's happening, and what fabulous work he does. So on that note, आपने कथक ये डांस फॉर्म कब से शुरू किया और कथक ही क्यों? मैंने 3-3.5 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया, और मेरे पेरेंट्स, आई मीन आई गिव माई क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, बिकॉज एट दैट एज यू रियली डोंट नो that you have a knack in you or you want to pursue it, anything like that. So they saw the knack in me, and then they put me into classical because my parents always believed, and Bengalis are little well read and all of that. So, and they recently had seen Pandit Birju Maharajji's performance back then. So they felt कि अगर डांस करना है, अगर है, because I used to dance in front of the television for hours on Bollywood songs. At that age? At that age. Oh, wow. So अगर मैं रो रहा होता था तो घर वालों को पता है कि टीवी पे गाना चला दो and I'll start dancing. So तो वहाँ से उन्होंने देखा that I have that interest, and they thought कि अगर क्लासिकल सीखेगा तो बैकग्राउंड और फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, and then at later age if he wants to switch to any other form he can, but the foundation will be strong by then. Because the rhythm, tal, lay, everything gets very strong when you are learning an Indian classical dance or music. तो बस वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. We lived in मध्य प्रदेश. वहाँ पे एक छोटा टाउनशिप है सिंगरौली, जहाँ पे मेरे पापा काम करते थे. तो वहाँ पे सिर्फ जो उस टाउनशिप में जैसे NCL प्रोजेक्ट्स हो गया या NTPC इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो गया, उनमें जो काम करते हैं उन्हीं के फैमिलीज रहती हैं. सो नॉट अ वेरी बिग सिटी, और एवरीथिंग केम वेरी लेट. अगर मूवी कुछ रिलीज़ होता है तो 1 महीने बाद वहाँ रिलीज़ होता था, और द मीन्स टू लर्निंग वॉज वेरी लिमिटेड इवन टिल टुडे. वहाँ 12th के बाद वन हैज़ टू स्टेप आउट फॉर ग्रेजुएशन एंड ऑल टू अदर बिग सिटीज़. तो वहाँ पे टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल था, और जो हमने किसी को अप्रोच किया, लाइक माई मदर अप्रोच समवन हु वाज वेरी एक्टिव देयर इन द आर्ट एंड कल्चर फील्ड. सो शी यूज्ड टू टीच कथक, बट शी यूज्ड टू टीच एनीथिंग इन द नेम ऑफ कथक. आई मीन इट वाज नॉट authentic. Then we came to Delhi for my cousin sister's marriage, and then she got to know about my guru, Srimati Gitanjali Lal, and everyone said that why don't you go and meet her. And then she went, and that was the time. उनके बेटे जो हैं अभिमन्यु लाल, वो भी डांस करते हैं. उनको डांस करते हुए देख के मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ, अब तो आप अपने बेटे जैसा इसको भी बना दीजिए. एंड दैट वाज, मतलब 3.5 साल से मैंने सीखना शुरू किया था, और ये 5 साल की बात है, मतलब 1-1.5 साल बाद की बात है, व्हेन वी वेंट टू दिल्ली. और उसके बाद से आई हैव बीन लर्निंग अंडर हर
Guru Gitanjali Lal. Did you follow a specific gharana in Kathak? Like we have different Kathak gharanas. Yeah. Maybe that's my first question. Yeah. So I do is Jaipur Gharana. We have 4 different gharanas in Kathak: Jaipur, Lucknow, Banaras and Raigad. जिसमें से रायगढ़ जो है वो बहुत कम लोगों को पता है. वो almost on the verge of extinct हो रहा है because very few people are following the traditional form of Raigad Gharana. But other 3 are very popular, and Lucknow is very even popular because of Pandit Birju Maharaj ji. Yeah. He made it worldwide famous. और बाकी दोनों के बारे में लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रही है. सो आई फॉलो जयपुर घराना. माई गुरु इज फ्रॉम जयपुर. So do you think, like, in recent past we saw that Bollywood had, Kathak, Yeah. right? I mean, very recent, films, especially the Sanjay Leela Bhansali kind of setup. Yeah. Do you think since then now Kathak has become like huge famous across India, or it was always there? I mean, what's your thought on that? Cinema has played a major role in making it famous, but not now. I would say when Gopi Krishna ji came to Gopi Krishna ji is one of the legends Yeah. of Kathak fraternity, and he came to Bombay. He was also from Banaras Gharana. So he came to Bombay and he made it very famous because अगर आप देखोगे पुरानी फिल्म में झनक झनक पायल बाजे या फिर मुगले आजम, इन सारी फिल्मों में कथक ऑलरेडी वॉज देयर. तो कथक ऐसा फॉर्म था जो, या फिर शतरंज के खिलाड़ी जो सत्यजीत रेज डायरेक्टेड फिल्म, इन सब फिल्मों में कथक की बात हुई है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट वी हैव. एनीवन हु शोज द मुगल कल्चर ऑफ our country through films, they need Kathak because Kathak was picked up by the Mughals. And so cinema has played a major role, and abhi because of social media and all, it has even become more famous, and because of Sanjay Leela Bhansali using Kathak, and now Rocky and Rani में जैसे भी use किया है करण जौहर ने. Right. So I would say yes that it has made, I mean, Kathak films have played a major role in promoting Kathak. Great. So on that note, in India especially we see कि आप कुछ भी करो, मतलब society का कुछ opinion होगा शायद, एक perception होगा. So are there any perceptions especially when a male or a guy is performing in Indian classical dance forms? Yeah, there is. So have you faced any of the challenges, or are there any perceptions people have built about you in this particular journey? Many challenges, and I would not say big challenges, even little challenges. Like for us dancers, we have to do our makeup for stage, right? Yeah. So when I'm doing my makeup and I'm getting down and I'm probably booking a cab or something like that, people will look at you. Little challenge, they won't come and tell me anything. Correct. But that look on their face is enough, said enough. Or the cab driver looking at me through the rear view mirror is enough. Correct. For someone who knows कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, why is that person looking at me? Correct. या फिर going and buying a makeup for yourself. Is it? Yeah, I mean the salesmen, sales girls, they will look at you as if like एक लड़का makeup खरीदने आया अपने लिए. So these little things matter a lot. तो अब तो thank God online सब कुछ हो गया. You don't even have to go to a shop. But I'm saying when all this was not there, like या फिर I've been brought up in Delhi, so Delhi is a very business culture. Correct. है ना, business families and Punjabi families from Haryana, so they are very rigid in their upbringing and thoughts. So to accept a male dancer and especially classical dancer, Correct. because maybe because of all of these things, when you're doing a hip hop and all, you're wearing a jeans and you're putting up your best outfit, casual outfit, you're wearing shoes and all these outfits and everything is considered very manly, so you are not looked down upon. Correct. And a classical dancer has to do a certain kind of a get-up, wear a makeup, wear ankle bells, do the eyes and all, wear a little bit of lipstick, and then everything changes. Right. So अगर मैं probably jeans और t-shirt में करता तो लोगों को इतनी problem नहीं होती जितना कि मैं अगर get-up में करूँगा जितनी problem होगी या होती थी.
अब तो thanks to social media and films like these, they like Rocky and Rani, now they have come up with all of these progressive thoughts. तो अब तो धीरे धीरे stereotypes are breaking, but I have faced all these problems. Even in my school, I was the only one doing classical dance. In my school, within my relatives, in my colony, my college life, I was the only one doing classical dance. कोई और नहीं था लड़के में. I'm talking about male dancers. कोई और नहीं था. And बच्चे भी नहीं भेजते. Like parents are also apprehensive of sending their kids to learn these kind of things, thinking that they will become effeminate, or they will become girly, or their mannerisms might change. Because जितना फिल्मों ने इसको प्रोग्रेस किया है, इसको पहुंचाया है, also films have been very derogative in the way they have shown dancers or gurus. True. अगर आप राजा हिंदुस्तानी देखो, उसमें कोई डांसर है, वो effeminate होकर आता है, या आप हमें राही प्यार के में जूही चावला के गुरु होते हैं, वो उनको भरतनाट्यम सिखा रहे होते हैं. He is also very effeminate and his mannerisms are very girly. So I would say it has both played a good part and bad part also, because at that point of time TV was the only exposure. Because now you have your social media, your Instagram, now you have a lot of exposure, but at that point of time television and films were the only exposure one could get, and they saw कि अच्छा डांस सीखने से तो ये ऐसे हो जाएंगे, तो फिर इससे अच्छा हम अपने बच्चों को ना भेजें क्लासिकल डांस सिखाने के लिए. Correct. हाँ. So I am, and maybe you might want to avoid this question, but I am of an opinion that your orientation and sexuality is not based on what you do. Yeah. Right? Be it a corporate job, be it an actor, be it a dancer. Yeah. But has it ever happened that because a male, a Kathak dancer or a classical dancer, I would say, there are questions about orientations and stuff, because sexuality doesn't have anything to do with what you practice and perform. Yeah. Have you seen any of these challenges? Maybe not for you, but in and around when you're performing in this particular, when you're pursuing this particular art form? Yeah, I have seen it. In the sense that, like I said, because the way you look on stage make a perspective for the other. Right. People make a perspective. Acha, he's putting on makeup, he's putting on his ghungroos and all. And in our Kathak, we have to do, like any classical dance forms, we are also portraying. Basically it was a solo dance form. Now people have started doing groups and productions. When I'm saying now, it's a progress of say 30-40 years. But earlier, classical dance form was a solo dance form. So when you are representing the dance form, you're telling a story, you have to also do the female part and the male part, and you're doing naikas, different kind of naikas, you're portraying Radha, you're doing the romance and everything. So for people, for a aam janta to watch a dancer doing the female part, how will a dancer do a female part without being like that? Correct. You're a storyteller. आपको गुस्सा आएगा तो आप गुस्सा दिखाओगे, आपको सजना है तो आप सजोगे ना. अगर आप लड़की को दिखा रहे हो तो आप बिना वो मैनरिज्म्स करे, लाइक वेयरिंग अ ईयररिंग, तो आप बिना वो ये करे आप कैसे दिखाओगे दैट गर्ल इज वेयरिंग एन ईयररिंग. तो ये सारी चीजें आम जनता को ऐसे लगती है, अच्छा ये तो लड़कियों जैसा कर रहा है, जबकि ये नहीं देख रहे कि वो लड़का होकर इतना अच्छा कर रहा है. करेक्ट. उनको ये परसेप्शन होता है, अच्छा ये तो लड़की जैसे कर रहा है. इज ही स्ट्रेट और इज ही bisexual or gay or something like that? Absolutely. And trust me, the question is reason being because as we said, we're doing these podcasts, we're talking to people is because we would want to change those perspectives. That as you rightly said, you were lucky कि आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से एक डांस फॉर्म आइडेंटिफाई किया, पढ़ाया, उसके लिए इतने सारे एफर्ट्स लिए. बट मे बी द पेरेंट्स नीड टू नो दैट इट्स नथिंग अबाउट a particular dance form or what the person does. It's something that can be just natural, and we don't need to really tag all of these things to what we pursue and what we practice. Said that, आप अभी मुंबई में काम कर रहे हो, पिछले 3-4 साल से आप मुंबई में हो. How difficult it is to come all the way from a different city, even in Mumbai, and start your career here, or do whatever great stuff you're doing right now. Okay, so I read this, don't stop chasing your dreams because dreams do come true. And take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. So while I was reading this, I felt that okay, I have been following this without really knowing that I have been following this. I
I was very happy in Delhi, working, dancing, and because I was getting trained under a very legendary guru, so in the fraternity people started knowing me through her कि ये तो अभिनव गीतांजलि लाल जी का शिष्य है, और उसके थ्रू I was getting work. Then I worked in the same institute where I passed out from. Okay. As a company dancer. So after graduation, they took me as a company dancer, and they pay you well, decent money, कि आपका फैमिली के साथ रहकर गुजारा हो जाएगा. हाँ, because then family है तो एक घर है, सब कुछ है, गुजारा हो जाएगा. Very good amount, and you get to perform everywhere. And because it's a government body organization, they have huge performances, India and internationally, which also I did for 2 years. Then I got a call from Singapore to be the head of faculty in an institute called Apsara's Arts. I took the opportunity. I said that I'm bored. So my main point is I get bored very easily. And because I'm in the creative field, I don't know with other creative arts people who are involved in creativity, whether they do get bored or not, but I do. So 2 साल मैंने जब कर लिया, मैंने कहा कि हो गया तो नौकरी जैसा लग रहा है. एंड इट वाज अ नौकरी बेसिकली. गवर्नमेंट जॉब था, हमें थंब करना पड़ता था, और नहीं पहुंचे टाइम पे तो हमारी सैलरी कटती थी, पैसे कटते थे. इट वाज अ नौकरी एक्चुअली. फिर ये तो नौकरी जैसा लग रहा है. आई नीड टू गो एंड एक्सप्लोर मोर. मैं गया सिंगापुर. आई वर्क देयर एज दी HOD. अगेन इट फेल्ट लाइक अ नौकरी. Again, it felt like a 9 to 5 job where I was just teaching students there and making the curriculum as part of the HOD. And my performing arenas were in India were more, and in Singapore it got restricted because it was a contractual thing. I was not allowed to do my own thing, my own performances. I was only allowed to do which the institute asks me to. Again, I got bored. And in my head, I always thought कि बॉम्बे में जो कथक डांसर्स हैं somehow, I mean, I felt that authentic नहीं है. जो सिनेमा में रिप्रेजेंट किया जाता है, या जो like हमने कहा कि authentic नहीं है, या मुझे ऐसा लगा कि if so and so person can, you know, do it there, I should be the one and showing them the authenticity कैसे जाके करते हैं. ये मेरी thought है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे डांसर्स नहीं हैं, अच्छे हैं. I thought that okay, I think I should go, and like I said, बचपन से मुझे बॉलीवुड गानों पे और एक कीड़ा था. मतलब I was a big fan of Bollywood, and I'm still is. I love that बड़ा पर्दा और बड़े पर्दे में डांस देखना, संजय लीला भंसाली's films, and not just Kathak dance, any dance. I like the Bollywood choreographies also, and I was always intrigued about the choreography, how they do it for camera, because it's very different from what we do it on stage. In stage we are dancing at one go, and for camera हमें सिर्फ इतना करने का एक शॉट कट करेगा, टर्न करेंगे तो एक शॉट कट हो जाएगा. So I wanted to learn that, and I did my post graduation in filmmaking. Wow. Yeah. So film direction basically. I did my post graduation in film direction. So films was always a big part in my life. मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ से भी बोर हो गए अब बॉम्बे चलते हैं, बॉम्बे जाके देखेंगे क्या करना है. तो बस मैं आ गया, एंड इट हैज़ बिन लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज सब सेटअप अपना आप छोड़ के आते हो. कहीं से भी सेटअप आप छोड़ के आते हो, एंड टू रीच आउट टू पीपल टू लेट देम नो दैट ओके नाउ यू आर इन बॉम्बे एंड यू वांट टू वर्क. It is difficult, but thanks to social media, you can put your voice and you can be active and you can be heard. So let's see क्या होता है. If not, then I can definitely guide someone. So, how's Mumbai been so far for you? I mean, are you being, accepted with open arms? Do you face those challenges that, maybe like I'm in Mumbai since my birth, and he's an outsider. Do you face that? No, not yet. Great. Not yet. I face this problem with my classical fraternity people, thinking that now he has shifted to Bombay, अब तो ये Bollywood type का करेगा. That I am facing little bit here and there, but obviously I don't give a damn. That's why I'm here. And I mean, no offense to any guru or any senior Kathak dancers.
It's just me and my point of view that I am a dancer first. My guru has been a huge inspiration for me. She was an actress also. And then she decided she was always a dancer, but she has done few films. But she never liked that, and she said that dance is my forte, and I want to be part of this throughout my life. She has told me कि you are a dancer first and then a Kathak dancer. Wow. Always believe you are a dancer first. Wow. क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसे आया था कि मुझे किसी फिल्मी गानों पे मुझे करना था कथक. उन्होंने मुझे फ़ोन किया था. आई आज माई गुरु कि मुझे इसमें कथक करना है. तो उन्होंने कहा कि डांस तो डांस ही है ना, चाहे आप उसमें करो या किसी और गाने पे करो, बट मेक श्योर दैट इट्स एस्थेटिकली नाइस एंड प्लीजिंग. यू आर नॉट लाइक मतलब चीप ना हो वो चीज़. It should aesthetically be nice and very graceful, and and the platform should be graceful. It should not be like कि कोई party हो रहा है, people are drinking and you are dancing and all that. So that make that a point. Otherwise dance is dance, and she has always told me, and that's what I follow कि अगर dance है तो भाई कुछ भी कर. हाँ. So और यहाँ पे आके मुझे ऐसा कोई problem नहीं हुआ. People have been very warm with me. Great. Yeah. So moving ahead, while we talk about your live performances, आप जब choreographies करते हो films के लिए, events के लिए, ये हर एक ball game अलग है या same है? I mean the events, the film choreographies and the live shows, हर एक चीज़ कैसे कैसे है? सारे ही अलग हैं, and everything requires a different kind of perspective and outlook, because for a live show, suppose if I'm doing my solo, then it requires a different kind of practice. I have my live orchestra with me, the musicians, percussionists and all, and I rehearse with them, and it's a 40 to 1 hour piece. So it's entirely my game, my strength, my stamina, what I do, and it's up to me. Then there are performances where I have to do it for a company, corporate company, for an award show or something like that, like a filler. They need a performance, 10-15 minutes, group performance. Then it's like a group with a recorded music, because then you don't have the live orchestra with you. तो इसकी preparation अलग होती है. Then you have उसमें choreography, I mean coordination with the other dancers and all is more important, and how you fill up the entire stage. One thing is common, that all this is live, so your practice plays a major part, your riyaz plays a major part, your stamina, your coordination, your remembering what movements, the whole choreography sequence. So one has to be well practiced and well prepared to come on stage and perform. For film and all, if I'm dancing on camera, then it's cut, like एक छोटा सा सीक्वेंस किया, कट हो गया, एक छोटा सा सीक्वेंस हुआ, कट हो गया. इफ आई एम कोरियोग्राफिंग, देन तो फिर वो किस चीज़ के लिए, लाइक रिसेंटली आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर अबू जानी संदीप खोसला, द एज डिजाइनर्स. आई choreographed an ad shoot for them, for their couture. So it was a total different thing. I mean they gave us a brief about what they wanted, how they want to incorporate Kathak and Sufi, a little bit of Sufism also, whirling and all of that जो हमारे कथक में होता है, उसको कैसे, and use of the dress, अंगरखास and all, घेराज, so use of fabric. तो उसका फिर डिपेंड करता है कि उनको कॉन्सेप्ट क्या चाहिए उसके पीछे. तो it is a different all these things have a different perspective. And what's next? What's your plan? आगे के projects कैसे, क्या है, क्या vision क्या है आपका? तो मैं बड़ा विजन बता सकता हूँ, छोटे छोटे ड्रीम्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिकॉज इट्स सेड कि यू शुड नेवर टेल योर नेक्स्ट स्टेप, या एंड नेवर रिवील इट. सो ऑफ कोर्स आई वांट टू बी इन द आर्ट फील्ड. I want to choreograph, I want to dance, I want to be behind the camera, I want to be in front of the camera as a choreographer, as a dancer, as an actor maybe, who knows. Like recently I saw Rocky and Rani, and the only thing which I felt was not working is Alia Bhatt's father, who is a terrific actor otherwise, Bengali actor.
was not able to. He was playing a father whose profession is of a Kathak dancer. So I felt कि he was not doing justice to Kathak. Correct. सिर्फ चक्कर चक्कर दिखा देना is not Kathak, या सिर्फ कुछ मैनरिज्म्स दिखाना इज़ नॉट कथक. सो आई फेल्ट कि एक कथक डांसर को अगर आप वहाँ पे एक्टिंग करवाते तो वो ज़्यादा खिल के निकल के वो बारीकियाँ निकल के आती. तो वाई नॉट इफ़ आई गेट a role, not just about Kathak dance, about anything else. I am very much open to accepting this field also. Like I said, that I've done filmmaking as my post-graduation. So films have played a major role, and it will play a major role in my career. Yeah, and then performing for stage, for doing choreographies for stage. Myself performing in festivals in India, abroad, collaborations with other artists. Yeah, so यही सारी चीज़ें हैं which I'm looking up to. And now when you said that, आप मुंबई में नए हो, social media is one place, which is probably taking your work to a next level. I was just recently following your one of the post, which said that, किसी ने तो troll किया था कि आप विदाउट टी शर्ट कथक कैसे परफॉर्म कर सकते हो. सो व्हाट इज इट? आई मीन, कैन यू डू इट, कैन यू नॉट डू इट, व्हाट्स द बैकग्राउंड, योर टेक ऑन दैट? सो कथक जो है वो 5000 साल पुराना डांस फॉर्म है, जैसा कि नाट्य शास्त्र में बताया गया है. Correct. और 5000 साल पहले कौन सा अंगरखा या कौन सा कुर्ता था, आप मुझे ये बताओ. जस्ट हैव अ बेसिक लॉजिक. आई मीन नॉट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन हु इज आस्किंग मी. कि आप बेसिक लॉजिक से ही देखो तो तब तो कपड़े ही नहीं थे. तो बेयर बॉडी तो करते ही होंगे, बेयर बॉडी. आज भी भरतनाट्यम कुचिपुड़ी बेयर बॉडी ही करते हैं, अभी भी नहीं पहनते. एंड बिकॉज मुगल एरा के इन्वेजन से हमारे कथक का स्वरूप भी काफ़ी बदल गया. लाइक फ्रॉम परफॉर्मिंग ऑन डिवोशनल और माइथोलॉजिकल स्टोरीज टू नाउ परफॉर्मिंग इन द रॉयल कोर्ट्स फॉर द मुगल किंग्स. एंड उनको रिझाना, क्योंकि दे केम एंड देन दे ब्रोक ऑल द टेम्पल्स एंड देन दे गॉट ऑल द डांसर्स टू दे सेट कि भगवानों के सामने करना बहुत हो गया, अब हमें आप इम्प्रेस करो, हमें रिझाओ. तो फिर कॉन्टेक्स्ट भी बदल गई. फिर गज़लों पे करने लग गए, क्योंकि भगवान का नाम लेके तो आप राजा के सामने डांस नहीं कर सकते, मुगल राजा के सामने. तब गज़ल आ गया. सो गज़ल बिकेम अ मेजर पार्ट ऑफ आवर डांस रेpertoire. देन केम तराना. अब गाना सब हमारे भजन और वंदना यही सब होते थे, तो अब दूसरे गाने कहाँ से लाए? तो फिर अरबिक म्यूज़िक को लाया गया, पर्शियन म्यूज़िक को लाया गया. फिर कपड़े भी बदले गए. अब जब लड़के डांस करते थे तो वो उन्हीं का जो उनका अंगरखा होता था या उनकी शेरवानी जैसी उनका गेटअप होता था, वो फिर डांसर्स एक्ट करने लग गए. तो ये चेंज हुआ है और अभी भी चेंज हो रहा है. एंड इट्स एवर इवॉल्विंग बिकॉज नथिंग इज कॉन्स्टेंट लाइक वी से. एंड बेयर बॉडी डांस करना तो बहुत सालों से, टेम्पल में भी बेयर बॉडी डांस करते थे, जो मेन डांस करते थे, नॉट द विमेन. तो वो आई गेव हिम अ लेफ्ट राइट एंड सेंटर आंसर. एंड मतलब आप कुछ बोलो. सो सोशल मीडिया में आप बिना पढ़े लिखे आके कुछ भी कमेंट कर देते हैं. यू ओनली सी वन साइड ऑफ इट एंड यू डोंट सी व्हाट्स हियर. करेक्ट. यू सी अ नाइस एम्ब्रॉयडरी, और उसके पीछे उस एम्ब्रॉयडरी को आप देखते हो तो कितनी तारे उलझी, उसमें जो धागे होते हैं वो उलझे हुए रहते हैं. राइट. तो वो भी तो आर्ट है. लाइक वो जो मेहनत है, आप तो सुंदर वाला साइड देख रहे हो, जो धागे उलझे हुए पीछे है वो तो कितना मेहनत गया उसके पीछे, वो तो कोई नहीं देखता. एब्सोल्युटली. हाँ. एंड आपको जितना पॉजिटिवली अप्रिसिएशन दिया जाता है, और ये मैं हर एक मेरे स्पीकर को पूछता हूँ कि आपको ट्रोल भी किया जाता है? हाँ, जैसे ये दिस वाज वन ऑफ द ट्रोल्स. बहुत ट्रोल. जैसे मैं बॉम्बे आया तो अभी अबू जानी वाला जो एड शूट किया था वो मैंने डालना शुरू किया. पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग कि कथक को बदनाम कर दिया है, ये कर दिया, बिकॉज इट वाज लिटिल सेक्सुअल एंड इंक्लूसिव. द एड शूट was inclusive of all genders, all sexual orientations, all kind of figures, fat, thin, normal, whatever. So this ad was very inclusive and I was very happy to be part of it because it looked very progressive and liberal in its thought. So people said कि अच्छा ये कथक बिगड़ गया है, कथक बिगड़ गया है. कथक कैसे बिगड़ेगा? I am very small to बिगाड़ो and big dance form like this. ठीक है, जो इतना खुद में इतना विशाल है, उसको मैं एक छोटा सा एंटिटी होकर कैसे बिगाड़ सकता हूँ? वो तो खुद में बदल रहा है.
हम खाना नहीं खा रहे, पिज्ज़ा हम नहीं खा रहे, बर्गर, तो हम जो शरीर में डाल रहे हैं वो भी तो बाहर से आया है ना. पहले खाते थे क्या हम पिज़्ज़ा बर्गर? जब मैं छोटा था तब तो बर्गर और पिज़्ज़ा था ही नहीं मार्केट में, दिखता ही नहीं था. तो अब हम जो शरीर में डाल रहे हैं वो जब नया हो सकता है, तो ये तो एक डांस फॉर्म है, उसमें तो नयापन आएगा ही. करेक्ट. Even the language we speak, the Gen Z people speak the language, we don't know. I mean, we never used to call a table sexy. No, I'm just saying, Yeah, a car true. sexy. We only knew one word sexy is only for something who's sexually who's attractive. Correct. And we अब तो ऑब्जेक्ट को भी सेक्सी बोलते हैं. डे, वेरी सेक्सी डे यार. तो जब लिंगो हमारी बदल गई, सब बदल गया, आप डांस फॉर्म को कैसे अचार की तरह डब्बे में प्रिजर्व करके रख सकते हो? इट्स ऑल्सो चेंजिंग ना. या So while we talk about dance form changing, we see that in the name of Kathak, there are a lot of things are presented. मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको. मैं नाम नहीं लूँगा. एक गुरु हैं जिनको किसी स्टूडेंट ने कॉल किया और पूछा कि आप कथक सिखाती हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी सिखाते हैं. कौन से टाइप का आप कथक सिखाते हो? तो वो काफी सीनियर है, उनको लगा कि शायद से बंदी पूछ रही है कि आप कौन से घराने का कथक सिखाते हो. मे बी दैट इज अ क्वेश्चन. तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी घराने का नाम था. तो उसके बाद उस बंदी ने बोला नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आप ओरिजिनल कथक सिखाते हो या बॉलीवुड कथक सिखाते हो. एंड शी जस्ट मेंशन कि मैं रो या हंसू करूं, मैं क्या करूं. quite witty. So and again as you said, we can't control things. Yeah. ठीक है, we can't control things. Things are evolving. That's fine. In a way, at least because of that, people means these dance forms, and even that happens with a lot of folk forms like Lavani. We are reaching to a lot of people more, especially to the Gen Z and the millennials. But what's your take on these different dance forms being mixed and then performed? I would say naming them correctly is very important. Correct. And it depends on, the dancers, and the responsibility is on the dancers to name it correctly. If you're fusing two things, just keep it simple and call it a fusion. Correct. Just don't call it Kathak fusion or Bollywood Kathak. Just call it fusion. Correct. When you say Kathak, that means the responsibility of Kathak is also coming there. The authenticity of Kathak is also coming there. Just using one mere aspect of Kathak and dancing on a Bollywood song doesn't make it a Kathak Bollywood. Because Kathak is a vast subject. And you have footwork, you have spins, you have tal, you have lay, you have abhinay, you have सिर्फ गर्दन के 50 प्रकार हैं, गर्दन हिलाने के सिर्फ भावों के 50 प्रकार हैं. सबको नहीं पता, उनको लगता है कि बस 4 चक्कर ले लिया और फुटवर्क कर लिया वही कथक है. तो जब आप सिर्फ 4 चक्कर और फुटवर्क को लेते हो किसी और फॉर्म में, तो उसको कथक मत बोलो, उसको सिर्फ फ्यूजन बोलो. आई थिंक once you start naming it correctly, like I also do a lot of dance on Bollywood songs or semi-classical songs or or light songs and like that, but I never call it Kathak fusion or I'm having a workshop of Kathak Bollywood Kathak or Bolly Kathak. US में कुछ डांसर्स हैं वो बॉली कथक भी बुलाते हैं. तो हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो है, बिकॉज जो आम जनता है उसको नहीं पता. आम जनता को नहीं पता कि क्या रियल कथक है, कौन सा बॉलीवुड कथक है, या बॉलीवुड कथक कोई जॉनर भी है. जैसे कंटेम्प्रेरी जॉनर नहीं है कोई. कंटेम्प्रेरी इज द न्यू थॉट प्रोसेस. अब वो जॉनर ही बन गया है डांस फॉर्म में. कंटेम्प्रेरी डांस करते हैं, उसमें आपका जो डिसिप्लिन है वो बैले का है, जैज का है, उसको आप कंटेम्प्रेरी बुला रहे हो. इट्स द थॉट प्रोसेस. कल को कंटेम्प्रेरी कथक भी निकल आएगा, आ भी गया है, आई थिंक करते भी हैं लोग. इट्स द थॉट. अगर आप आज का दिखाते हो सोसाइटल प्रॉब्लम्स या आज की कोई स्टोरी दिखाते हो, वो वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ दिखाते हो, तो वो थॉट इज कंटेम्प्रेरी और डांस इज स्टिल कथक. करेक्ट. या So I think what we're trying to say here is, even if in case you're mixing it, just tell us tell people the right name. Right name. Don't name Kathak if you're mixing it. Correct. Just name it fusion. Yeah. Sorry. So if you're fusing two dance forms,
So don't name it Kathak. If you're fusing Kathak with a Bollywood song or a contemporary, dance form or anything, don't name it Kathak. Just name it fusion, and that's it. Because you don't want to give wrong information to people. Correct. And what I feel is कि जब अभी तो मैं I can say my hair is also graying, that I'm aging, but You're becoming wiser. Yeah. Don't say you're aging. I'm Say you're becoming wiser. So I like that. I'm going to say that going forward now. Yeah. So said that, मुझे ये याद है कि जब मैं स्कूल में या फिर कोई भी कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करता था, वहाँ पे क्लासिकल, फोक और सेमी क्लासिकल ये कैटेगरी होता था, या फिर बॉलीवुड ये कैटेगरी होता था. आई थिंक ये पिछले कुछ सालों में ही हुआ है कि वी डोंट हियर सेमी क्लासिकल एज अ फॉर्म, बट वी हियर, आई इवन हर्ड लावनी कथक, वही ना. bollykathak. Bollykathak, yeah. I think that's and thanks for making that statement, because I think it's completely right that whoever is presenting it should name it in that particular way. Great. So before we end and before we move to the last conversation, we have a small token of love and a gift for you. So maybe I'll just ask the team to get it for you. Anything that you want to cover? No, I'm very happy that we got to chat candidly and very casually. Yeah. Also, we we tapped upon a lot of important issues also. So yeah, thank you for inviting me here, and look forward to coming here more often. So, as said, this is a small token of love. So we have a friend who's named as the Cake Wali Rasika, and she's just baked nice. Healthy muffins and a little more for you from all of us. Thank you, and thank you. the Cake It's the coffee hamper. Wali. It's the Shreyas hamper. it's maybe the chance pe dance. Chance pe dance hamper. But Yeah. it was a pleasure talking to you. Same and here. I am personally happy that I have been in conversation with someone who have been following for so long, and finally we are talking, we are having that conversation. So thank you so much for your time. Thank you. हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल तर आम्हाला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. कोणाला भेटायला आवडेल, कोणाबद्दल ऐकायला आवडेल तेही सांगा. शेअर करा, सबस्क्राईब करा, मॅक्सिमम लोकांपर्यंत पोहोचवा. हे सगळं आम्ही करू शकतो आमच्या फ्रेंड्स आणि कोलॅबोरेटर्समुळे. द केकवाली गिफ्टिंग पार्टनर्स, ठाणे अमृतालय आर बेवरेज पार्टनर्स, फूड पार्टनर्स मेतकुड. तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार.